So for today's video, we will be discussing some questions based on the modulus of a complex number. Okay, so for this, what we'll do is we'll first discuss the concept of modulus of a complex number, then we'll take some examples, some very good examples based on the concept of modulus of a complex number. Okay, so let's start with the concept of modulus of a complex number. Okay, so for this, what we'll do is we'll take the Argand plane. We know that in the Argand plane, now a complex number could be represented as a point. So there exists a 1-1 correspondence between the points of, let's say, the numbers of a complex number system and the points of the Argand plane. As in, if we take the Argand plane like this, okay, and we take a point here as, let's say, point P, which is having the coordinates a comma b. Now corresponding to this, what does this statement mean? That corresponding to any point on this Argand plane, let's say this is real axis over here and this is imaginary axis over here. So corresponding to this one is origin. Corresponding to any point belonging to this Argand plane, there would be a 1-1 correspondence to the numbers of the complex number system. As in, let's say corresponding to this point, let's say corresponding to the point 1, 2, there would be a unique complex number existing, which will be 1 plus 2i. And corresponding to that 1 plus 2i, there would be a unique point existing in the Argand plane, which is 1, 2. So this complex number, let's say this complex number is z over here. Okay, so let's say we write z is equal to a plus bi. So this a plus bi now uniquely corresponds to this point a comma b, and this point in the Argand plane, this uniquely corresponds to the complex number a plus bi. Okay, so the concept of modulus is whatever is the distance between this point. Now this point is, let's say this point is complex number z over here. Okay, this point corresponds to the complex number z over here. Okay, so this is the complex number z. This represents the complex number z. Now the distance of origin from this point represents the modulus of complex number z. The modulus, or we say it as magnitude of the complex number z. Now this length OP would be mod z. It is represented, the modulus of z is represented as mod z. So this distance would be mod z from here to here. Okay, now we take another complex number over here, which is just the image of this complex number z in the real axis. So we can see, observe that this angle theta and this angle theta both would be same because these are two congruent triangles. Now this complex number, let's say this point is p dash and the coordinates would be a comma minus b. So the coordinates are a comma minus b. Let's say this complex number. Now there is a concept of conjugate, as in if this complex number z is a plus ib, then we can write here conjugate of complex number z is actually z bar, which is a. Now it was a plus ib, it is a minus ib, this complex number. So here it is z bar actually. So this is a minus iota b is the conjugate of this complex number, a minus iota b. The original complex number, this complex number z was a plus ib. This conjugate of z is z bar, which is a minus ib. Now the significance of conjugate is, it is basically the image of this particular given complex number about real axis. Okay, now we can see that the distance of this point from origin and the distance of this point from origin both are same, right? So this represents the modulus of this particular complex number and this represents the modulus of this particular complex number. Both the moduli are same according to the diagram. So we can write here modulus of z is equal to modulus of this complex number. Now this complex number is z bar. Z bar means conjugate of the complex number. So we can write here z is equal to z bar. Okay, I am assuming that you know the exponential form of complex number. If you know the exponential form of complex number, so you must be knowing z is equal to
mod z e raised to power I theta, and here because the theta is corresponding to this angle. Now if this angle is theta, so this angle would be, when we write the exponential form of z bar, this angle will have to take as theta minus theta, because this angle is in anti-clockwise sense, this angle is in clockwise sense. So z bar, for z bar we're writing z bar mod z is equal to mod of z bar. So here we will be writing mod of z bar e raised to the power minus I theta. So z bar would become, now let's say this is the value of z and this is the value of z bar. Now if you multiply here, so we will be getting z bar is equal to mod of z. Now mod of z bar is equal to mod of z. So this will become, if you multiply these two, this will become mod of z whole square. So this is mod of z whole square into e raised to I theta, e raised to minus I theta. These will get cancelled out as these are reciprocal. So we will get z bar is equal to mod of z square. So this is the property that we'll be using in the given questions, in the coming questions. This is also a very important property. Okay, so these properties we'll be discussing, we'll be taking in the examples. Now one more property is there which says z raised to the power n mod is equal to mod of z raised to the power n. Okay, this is also a property which will be needed in the given questions. So these are the properties that will be, those will be needed in the coming questions. Okay, let's start with the questions. Okay, okay. So the first question is, okay, if mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to r, obviously r has to be positive because this is a distance. So the physical significance of modulus of a complex number is it represents the distance of the complex number, the corresponding point of the complex number from origin. So it is a distance. Distance cannot be negative. It will always be non-negative, it will always be positive or 0. So it has to be, here it is given it is positive because it is given by the statement that none of these complex numbers are 0. So all these are, the modulus are greater than 0. Okay, now this is the statement of the question. Modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3 equals r, which is positive. And okay, so this is given, and it is given that z1 plus z2 plus z3, this is not equal to 0. Then you have to find the value of modulus of sigma s2, as in we have z1 z2 upon sigma of z1. This value we have to find. Now this value will be in terms of r, or it may be a constant, that we'll see. Okay, so this is the given question. Now we have to find the solution of this question. Okay, so how to start the question solution? Okay, how to start solving this particular question? Okay, so for this what we can do is sigma, we know what does sigma mean. So it would be here z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1 upon z1 plus z2 plus z3, right? Now we can take z1 z2 z3 common from here. So this will become z1 z2 z3 modulus outside. Then we'll be getting 1 by, here it will become 1 by z3, right, plus 1 upon z2 plus 1 upon z1 upon modulus of z1 plus z2 plus z3. Okay, now see what we will do is, now this will become modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3, z1 z2 z3, and here we'll multiply with r square and divide with r square. So I'm dividing with r square. Why I'm doing this, you will understand. R square we are multiplying, so it will become r square by z3 plus r square by z2
plus r square by z1 upon mod z1, z2, z3. Okay. Now this r square I can write as z1 mod whole square. This one. So this one I will be writing as mod z3 whole square. This one I will be writing as mod z2 whole square. This one I will be writing as mod z1 whole square. Okay, corresponding to each of complex numbers. We'll write the term. Okay. Here it will become r cube upon r square. So here it will become r. Okay. After this I am writing the next statements over here. Okay. Next steps. Okay, so this becomes r. So here we have r over here. Okay, and after r I am writing this as mod z3 whole square. So this will become mod z3 whole square upon z3. Okay, plus mod z2 whole square upon z2 plus mod z1 whole square upon z1. This upon modulus of z1 plus z2 plus z3. Okay, so this is r times. Now mod of z square by z is z bar, right? So we'll have here z3 bar. This one will become similarly z2 bar, and this one will become z1 bar upon z1 plus z2 plus z3, right? Now the numerator becomes z1 plus z2 plus z3 whole bar, right? So this is r times modulus of z1 plus z2 plus z3 bar upon modulus of z1 plus z2 plus z3. Now we know that this is a complex number, this is a conjugate of a complex number, and modulus we are taking. Here also what we are finding is modulus of that particular complex number. We know that z bar mod is equal to mod of z. So these two will get cancelled out. So we'll have the final answer as r. Okay. So the answer for this particular problem is r. Okay. I hope you have understood. Okay. We'll move to the next question. Okay. Okay. So the second question is, let's say modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3 is equal to 1, and it is given that z1 z2, it is given that I am writing z1 square by z2 z3 plus z2 square by z3 z1 plus z3 square by z1 z2 plus 1 is equal to 0. Okay, it is mentioned over here, and we have to find the value or values, or let's say the possible values of modulus of z1 plus z2 plus z3. Okay, so this is the question. What the question reads: modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3 is equal to 1, and this expression is given. Okay, so this is the equation given, and what we have to do is we have to find the possible value or values of modulus of z1 plus z2 plus z3. Okay, this is the question. Okay, so what we'll do is we'll use a formula of our 8th, 9th standard formula, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. That will make use of in this particular question. Okay, in the solution. So let's start. Let's see how do we start the solution of this particular problem. So if you take the LCM over here, you will get, you'll get z1 cube over here, right? Plus we'll get z2 cube plus z3 cube. Now plus z1 z2 z3 will get. So I am here, okay, I am here trying to write this formula z1 z2 z3. Now if I write here z1 z2 z3, because it was plus z1 z2 z3 over here, I'm writing what I have done is I have subtracted 4 z1 z2 z3 from left hand side. So right hand side also I have to subtract 4 z1 z2 z3. So I have to write minus 4 z1 z2 z3. Is clear to you?
Now we know that the formula, why I have done this, because I had to generate this thing, that's why I had subtracted here. Okay, now we know that the formula is is z1 plus z2 plus z3. See, this thing gets generated over here, right? Now this thing, after that we have sigma of z1 square minus sigma of z1 z2. Okay, this is equal to minus 4 z1 z2 z3, right? Here also we can generate this z1 plus z2 plus z3. Okay, square terms are there, so we can write here z1 plus z2 plus z3 whole square, then minus 2 times of sigma z1 z2 will get generated over here. Minus 1 is already there, so minus 3. Total becomes minus 3 sigma z1 z2. This is equal to minus 4 z1 z2 z3. Here z1 plus z2 plus z3 is already there, right? Now what we'll do is we'll take this z1 plus z2 plus z3 as z. Okay, so if I take this z1 plus z2 plus z3 as z, this becomes z over here, this becomes z square. Okay, now after this term I'll write here. Okay, okay, see, after this term this becomes z. Okay, so here it will become z into z square, which is z cube. So on left hand side I'm writing z cube is equal to, now this z gets multiplied with this one. I'm taking this term on the right hand side. Okay, so you'll get is equal to 3z into sigma z1 z2 z3, 3z sigma z1 z2 this term, and minus 4 z1 z2 z3. So this will be the expression. Now from here and here, from these two terms, I am taking z1 z2 z3 common out. So this will become z1 z2 z3. This I have taken common out. So after this we will get here 3 times z, and then 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3. Now this thing minus 4, because z1 z2 z3 I have taken out over here. Now see, this, the modulus of z1 is 1, right? So here I can write z1 is mod z1 square upon z1 bar, right? Okay, mod z1 is 1, so this will become 1 upon z1 bar. Okay, so this 1 by z1, or I can write 1 by z1 as z1 bar over here, right? See, from the, if you used to use these two, you will get z1 bar is equal to 1 by z1, right? Okay, so using this one, 1 by z1 is z1 bar. Using this thing, 1 by z2 would become similarly z2 bar, and this will become z3 bar. So this expression becomes z1 z2 z3, and then we have 3z into, now this becomes z1 plus z2 plus z3 whole bar, right? Minus 4. Now what is this? This is z. So this z1 plus z2 plus z3 is z. So this becomes z bar. Okay, z bar into z is mod z square. So we have z cube is equal to z1 z2 z3, and then after that we have 3 mod z square minus 4. So this is a real number now, because all the numbers are real. Mod z is a real number. These are complex numbers. Okay, so this is also a complex number. So what expression we are getting is a complex number is equal to some other complex number, right? So if two complex numbers are equal, then their moduli are equal and their arguments are also equal, right? So we can equate the moduli of both the sides, both the complex numbers. Okay, so this statement would imply here, if you take the modulus over here, you'll get mod z cube is equal to, now you'll have to write mod z1 z2
z3. Now modulus of z1 is 1, modulus of z2 is 1, modulus of z3 is 1. So this thing will become 1 into 1 into 1, which is 1. Now after that we have the modulus of this thing. So it will become modulus of 3 times mod z square minus 4. This is 1. So the expression that we are getting is mod z cube is equal to mod of 3 mod z square minus 4. Now this is an equation in real numbers where modulus is involved. Okay, so what we have to do, how to open this, how to solve these sort of problems, what we have to do is we have to open the modulus, the bracket, this modulus we have to open. So for opening the modulus we have to find the critical point. How do you find the critical point of an equation involving modulus? What we have to do, we have to equate this to 0, right? So if we equate this to 0, we will be getting mod z square equals 4 by 3, which means mod z equals 2 by root 3, right? So here critical point we will be getting as mod z is equal to 2 by root 3. Okay, this is the critical point. Okay, so corresponding to this critical point, what you have to do is we will have to open the brackets. Okay, after this I'll write here. Okay, after this statement I'm writing over here, we have to take cases. Let's say if mod z is greater than 2 by root 3, what will happen? If modulus of z is greater than 2 by root 3, what will happen? This modulus will open with plus sign, right? So, and what we are doing is, let's say we are taking modulus of z is equal to t. I'm assuming it's a real number, I'm assuming this to be t. So what equation, now for this case, this modulus will open with plus sign, the outer modulus. So this equation will become t cube. Now here minus 3t square, and then it will become plus. So plus 4 is equal to 0. Now we can observe that t is equal to 2 satisfies this thing. How? Because it will become 8 plus 4, 12, 12 minus 12, 0. So t equals 2 satisfies. It's a cubic equation. One root we know over here, t equals 2. Remaining roots, how do we find it? By dividing with t minus 2, okay, a factor. So using factor theorem, we know that t minus 2 is a factor. So we have to divide with t minus 2. How do we divide it? Minus 2 is there. This is plus 4. So constant have to be minus 2 over here. Here t square should be there because this will become t cube. Now t, coefficient of t we have to find. How do we find the coefficient of t? What we have to do, here the coefficient of t is 0, right? How the coefficient of t gets generated over here? This t gets multiplied with the constant, we'll get minus 2. So we should get plus 2 when this t gets multiplied with minus 2. So for finding plus 2, it should be a minus sign. Minus 1 into minus 2 would become plus 2. So effectively that will get cancelled out, right? So this will be the second factor. Now this equals 0. From here we'll be getting t equals 2. Now we can see about this quadratic, sum is plus 1 and product is minus 2. So the roots are 2 and minus 1. So from here we'll be getting t equals 2 and t equals minus 1. See, what modulus of z is t. So this is modulus z equals minus 1. Not acceptable because distances are never negative, right? So this is gone. Now from here we are getting mod z is equal to 2. One solution we are getting from here. This is acceptable because this mod z equals 2 is greater than 2 by root 3. So this lies in this particular case. This is an acceptable solution. Okay. Now second case we have to take when mod z is less than 2 by root 3. What will happen corresponding to this case is this outer modulus becomes negative. So what equation we will be getting is t cube. Now this becomes negative. So here it will become positive left hand side. So it will be like this only. So it will become plus 3t square minus 4 is equal to 0. Now you can see the sum of coefficients 1 plus 3 4 minus 4 0. So the sum of coefficients is 0. So t equals 1 will be a root, right? So t minus 1 will be a factor. Now if t minus 1 is a factor, you know how to find the second factor. How do you find it? T cube is there, here t is there. So it should be t square, right? So if they multiply, t cube will be generated. Minus 1 is there, so the constant would be, we have to find minus 4. So it will be plus 4 over here. Now coefficient of t is 0.
So how does coefficient of t gets generated? T into plus 4 is plus 4 and this t should be minus. Okay, so here it is plus 4, it should be plus 4 only. Why? Because 4 into minus 1 would be minus 4 and this is plus 4, so gets cancelled out, coefficient of t. So this will be the second factor. Now this is t plus 2 whole square, so here we will be getting t equals minus 2 and from here we will be getting t equals 1. So we have two cases, but t equals minus 2 is not possible as it is the value of modulus of z. Modulus of z is a distance, so it cannot be negative. This is ruled out. T equals 1, which means modulus of z is equal to 1. Now this is less than 2 by root 3, hence it is an acceptable solution. So the possible values of mod of z are 1 or 2. Okay, so our answer we can write as modulus of z1 plus z2 plus z3 belongs to the set 1 comma 2. Okay, so this is our answer for this particular problem. Okay, now we'll take one more problem. I hope this is clear to you. Okay, okay, so जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 इज इक्वल टू 1 and it is given modulus of z1 square plus z1 square plus z2 square plus z3 square, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है. ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 ये 0 नहीं है. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 इज इक्वल टू 1 and z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to 0, and the third statement is z1 plus z2 plus z3 is a non-zero complex number. Okay, then find the possible, or let's say then the possible values of modulus of z1 raised to the power n plus z2 raised to the power n plus z3 raised to the power n are, okay, and we have options over here. First option is 0, second option is 1, then we have 2, and then we have 3. Okay, and it is given that n is greater than or equals to 2 and n is a natural number. Okay, it is the statement is given, and what we have to find, क्या find करना है हमें? Possible values of modulus of z1 raised to the power n, z2 raised to the power n plus z3 raised to the power n. Okay, this is the question. ये option है, multiple choice problem है. Okay, so question, I hope कि question आपको clear है. कैसे इसका solution find करेंगे वो अभी हम देखते हैं. तो इस question में actually क्या क्या किन किन चीज़ concepts की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं थोड़ा पहले discuss कर लेता हूँ. इसमें एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी. ट्रायंगल में हमें ये पता है कि ट्रायंगल में अगर एक सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर ये दोनों अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो ट्रायंगल इक्विलैटरल बन जाता है, राइट. और वी कैन से दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी 4 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर. तो हमने किसकी बात की? सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर. ये चारों पॉइंट्स जो है वो कोइंसाइड करते हैं. किस केस में? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में. तो इक्विलैटरल हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल बन जाता है. ओके, इस कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. ओके, और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में अगर हमने ये प्रूव कर दिया ट्रायंगल के केस में कि जो वर्टाइसेस हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी आर वर्टाइसेस, और ए वर्टेक्स का डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेट्स से एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट्स है, और बी वर्टेक्स का डिस्टेंस भी सेम पॉइंट से एक्स यूनिट्स है, लेट्स से एक्स इज अ कांस्टेंट, एंड सी वर्टेक्स का डिस्टेंस भी सेम पॉइंट से एक्स यूनिट्स है. तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट उस सर्कल का बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर?
कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर ऐसा रहेगा, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है इस ट्रायंगल को ऐसा, और इसका जो सर्कम सेंटर है, सिंस ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, इस सर्कम सर्कल पर, तो ये तीनों जो डिस्टेंसेस हैं, ये तीनों डिस्टेंसेस रेडियस हो जाते हैं, राइट। ये तीनों डिस्टेंसेस जो है रेडियस हो जाते हैं। दिस पॉइंट इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टाइसेस से सेम है तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर। ओके, क्लियर टू यू। अभी हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, स्टार्ट विद द सोल्यूशन। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें एक्चुअली जो लास्ट वीडियो में आपने रोटेशन का कॉन्सेप्ट देखा है उसका भी यूज़ आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके ओके, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर अपॉन 3, तो ये जो है, ये अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ और उस ट्रायंगल के तीनों इन पॉइंट्स को मैं z1 स्क्वायर, इस पॉइंट को लेट्स से z2 स्क्वायर, और इस पॉइंट को अगर मैं z3 स्क्वायर लिखता हूँ, तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होगा, राइट। और यहाँ से हमें ये पता है कि बाई 3 करने पर भी इसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। सो ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC, जिसके ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एफिक्सेस हैं, तो इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन हो जाएगा 0। सो वी नो दैट फ्रॉम हियर कि जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का वो ओरिजिन है। ओके, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट। अभी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पर गिवन है, अगर मॉडुलस ऑफ z1 की वैल्यू 1 है, सो मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो z1 स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, z2 मॉडल ऑफ z2 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से 1 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से 1 है। तो इसका क्या मतलब है, ये z1 स्क्वायर का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। इसका क्या मतलब हो गया कि ओरिजिन जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का सर्कम सेंटर भी होगा। क्लियर। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि सर्कम सेंटर of triangle ABC is origin एंड वो जो रेडियस है, रेडियस ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, यहाँ पर ये डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है, राइट। सो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, बट ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है। ओके, इसे हमने ज्वाइन किया, ओके, और इसे यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं, ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन है। ओके ओके, तो सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा। सो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया, क्या मिला हमें, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इज क्लियर कि ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसके बाद हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, रोटेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो रोटेशन के कॉन्सेप्ट से अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है यहाँ पर इक्वल हैं, बिकॉज यहाँ पे ये दे रखा है कि इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस भी 1 है, इसका मॉडुलस भी 1 है। तो ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस 1 है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस 1 है, एंड ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, राइट। तो अगर मैं इसे एक वेक्टर अज्यूम करूँ और इस वेक्टर को 120 डिग्री से रोटेट करूँ, ये एंगल 120 होगा, तो हमें ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, फिर इसे अगर मैं 120 प्लस 120 240 डिग्री से रोटेट करूँ तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट। सो आई कैन राइट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1 स्क्वायर इंटू, नाउ दिस विल बिकम e raised to power I 2π/3। नाउ e raised to power I 2π/3 इज, अगर मैं इसे ओमेगा लिखता हूँ,
आई 2π/3। अगर मैं e⁻i 2π/3 को ओमेगा लिखता हूँ, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, नाउ इफ दिस इज ओमेगा तो यहाँ पर ये जो टोटल एंगल आएगा वो हो जाएगा e⁻i 4π/3 यहाँ पर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। सो वी हैव सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? z3 का स्क्वायर जो होगा वो z1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। नाउ ओमेगा इज सेम एज ओमेगा रेज़ टू पावर 4 बिकॉज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज़ टू 4। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से क्या मिल रहा है? z3 is equal to z1 into omega and then plus minus is equal to ये, ठीक है। तो z3 की वैल्यू ये मिल गई प्लस माइनस z1 इंटू ओमेगा, और z2 की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो जो भी गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन क्या था? z1 रेज़ टू पावर n प्लस z2 रेज़ टू पावर n प्लस z3 रेज़ टू पावर n। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे मॉडुलस ऑफ z1 रेज़ टू पावर n प्लस z2 क्या है? z2 इज दिस वैल्यू, सो वी हैव टू राइट प्लस माइनस z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस माइनस z1 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर n। ये स्टेटमेंट हो गया। अब z1 रेज़ टू पावर n को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने z1 रेज़ टू पावर n को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मॉड z1 रेज़ टू पावर n, राइट। मॉड z1 इज़ 1, यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, मॉड z1 इज़ 1। तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस माइनस एंड देन वी हैव ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर n, राइट। ये 1 हो गया। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड देन रेज़ टू पावर n प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर n, ये वैल्यू है, राइट। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? और n एक नेचुरल नंबर है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो हम पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबल है। तो मॉडुलस है, तो मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है। एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हमें पता है कि ये जो भी स्टेटमेंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है? मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ दिस वैल्यू, राइट। सो मॉड ऑफ प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n प्लस मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर n। नाउ इसका मॉडुलस 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 पॉसिबल है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 3 पॉसिबल है। अब ये हो भी सकती है 3, नहीं भी हो सकती है, बट मैक्सिमम पॉसिबल इज 3 ओवर हियर। ओके, अभी चेक करते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अगर हमने n को 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, n को अगर 2 लिख दिया, मिनिमम वैल्यू n की 2 यहाँ पर ले सकते हैं। तो n को 2 लिखा तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर n योर, ओके, n को हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। सो 2 प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज़ 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सभी को ये पता है कि 1 प्लस ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। सो ये हमें 0 मिल गया। तो n की एक वैल्यू 2 के लिए 0 हमें मिल रहा है, राइट। सो 0 इज़ वन ऑफ द आंसर्स। ओके, अब n को 3 लिख कर देखते हैं। सो n को अगर हमने 3 लिखा यहाँ पर, 3 लिखने से ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 3। अब ओमेगा ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 3 लिखा है, सो ये प्लस माइनस दिस वुड बी 1 योर प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 6 बन जाएगा ये। सो ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इज़ 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है। सो ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी 3 लिखा है, सो ये भी यहाँ पर प्लस माइनस
ओके, ये 1 हो जाएगा, राइट। सो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, अब अगर मैंने यहाँ पर अगर दोनों प्लस प्लस साइंस लिए, ओके अगर मैंने यहाँ से ये दोनों प्लस प्लस साइंस लिए तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा विच इज़ 3। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3, राइट। अगर मैंने एक को प्लस एक को माइनस ले लिया, सो 1 + 1 2 - 1 इज़ 1। सो पॉसिबल वैल्यू यहाँ से क्या क्या मिल रही है 3 and 1, यहाँ से 0 हमें मिल चुका है 3 and 1। लेट्स चेक फॉर 2 इफ़ 2 इज़ परमिसिबल और नॉट। तो हम क्या करते हैं, n को 5 ले लेते हैं। अगर हमने n को 5 लिया, यहाँ पर 5 लिया, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या बन जाता है, अगर हमने 5 लिखा इसे तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 5, राइट। सो देखो ये ओमेगा रेज़ टू द पावर 10 बनाएगा यहाँ से, और ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। सो 1 प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 10। ना ओमेगा रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू ओमेगा के इक्वल होगी, बिकॉज ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 जो है वो 1 हो जाएगा। सो ये ओमेगा हो गया, फिर यहाँ से प्लस माइनस ये ओमेगा रेज़ टू द पावर 5 बनेगा सॉरी, ओमेगा रेज़ टू द पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, राइट। हमें ये चेक करना है कि वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक प्लस साइन लेता हूँ और एक माइनस साइन लेता हूँ, ठीक है यहाँ से मैं प्लस माइनस लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ना 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज -2 ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस 1 होता है। सो ये वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, राइट। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी पॉसिबल है। इसमें और भी केसेस आएंगे, बट हमें यही चेक करना था कि 0 1 2 और 3 पॉसिबल है या नहीं, राइट। सो 0 इज़ पॉसिबल, 1 इज़ पॉसिबल, 3 इज़ पॉसिबल एंड 2 इज़ पॉसिबल। सो ऑल द ऑप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन are correct. Okay, understood? Hope you have understood the question. This was a very nice question based on modulus of complex numbers. Okay, thank you.